વાળો હાજરા હજૂર જૈન વિતરાગતા એમણે એ શાસ્ત્રો કહ્યા ગણધરો રચ્યા હા એમાંથી મોક્ષ પાવાનું શોધી લીધું એનાથી કોઈ ચમત્કાર પણ હોવા છે ભીતનું થાય છે ને આમ પૈસા મળે ને આ મળે એવું શાસ્ત્રમાં નથી સમજાણું કાંઈ વિતરાગ શાસ્ત્રમાં વિતરાગતા પ્રગટ કરીને મોક્ષ થાય એ સાધન તો ત્યારે બાજુથી જો એ વાત ત્યાંથી સાબિત થાય બીજા પંથમાં અનેક વાતો કરી જગતને ભરમાવ્યા કરે સમજાણું કાંઈ यहाँ कोई कहे अहम द्वारा भाषित અને ગંધર્વ દેવો से दूसरा हुआ सूत्र तो द्वादश रूप है तो 12 रूप होती रचना तो इस काल में दिखता तो नहीं 12 तो आ काल में दिखते नहीं दिखाई दिखता नहीं तब परमार्थ तो मोक्ष मार्ग कैसे सधे इसका समाधान करने के लिए गाथा है अरहंत भाष्यम गणधर्म रचितम सूत्र में जो उद्देश्य है हरिहंसनो कहेनो गणधर्मो रचेनो इस सूत्र में जो उद्देश्य है उसको आचार्य की परंपरा से जानते हैं हाँ आर्यम परंपरायण एक भगवान चार आचार्य साचा क्या ત્યાં સુધી મારો ચાલો આવે છે સમજાય છે કાંઈ अरहंत भाष्यम गंधम रचितम सूत्र में जो उद्देश्य उसको आचार्यों की परंपरा से जानते हैं उसको शब्द ने अर्थ के द्वारा जानकर वाणी અને એના ભાવ એને જાણીને ભાવ ક્યારે એમ જાણવું જોઈએ વાણી તો અમુક પ્રકારની છે પણ એનો આશય શું છે પ્રયોજન શું છે એમ જાણીને जो मोक्ष मार्ग को साधता है रागથી ભિન્ન કરીને આત્માની સમ્યક દર્શનની સાધના કરે છે રાગથી ભિન્ન કરીને આત્માના જ્ઞાનને સાધે છે અને રાજને આવીને સ્થિરતાને કરીને જે સાધે છે મુક્ત વાત હા उसको समझाना वो मोक्ष होना एक भव्य है बरोबर हाँ ये अल्पकाल ना है केवल ज्ञान थवानो मुक्ति पामवाना हाँ समझाऊं कहाँ है यहाँ फिर कोई पूछे कि आचार्यों की परंपरा क्या है अन्य ग्रंथों में आचार्य की परंपरा नियमित प्रकार से कही गई है श्री वर्धमान तीर्थंकर सर्वगण देव के पीछे त्रिलोकनाथ परमात्मा आए भगवान तीर्थंकर सर्वदेव ने પછી 3 કે વિજ્ઞાની થયા ગૌતમ સુધર્મ અને જંબુ એના પછી 5 સૂત કેવડી થયા દ્વાદશ સૂત્રના જ્ઞાન था 12 અંગનું જ્ઞાન હતું विष्णु नंदी मित्र अपराधी गोवर्धन भगवान इनके पीछे 10 पुरुष के ज्ञाता 11 हुआ 11 विशाख वशिल क्षत्रिय जयसेन नागसेन सिद्धार्थ वशिष्ठ विजय विजय गंगी दर्शन इनके पीछे 5 11 उनके धारक हुए नक्षत्र जयपाव पांडु इनके पीछे 1 अंक के धारक 4 हुए एक अंगत
આચાર્ય ભક્તિ જી જાય. સુભદ્ર યશોભદ્ર ભદ્રબા ઉલ્લો હતા इनके પછી एक उनके पूर्ण ज्ञानी को तो विचिति और उनके एक देश अर्थ के ज्ञाता आचार्य आचार्य आदि एक देश में भाव एना जान है. इनमें से कुछ के नाम रथ बलि माघ नंदी दर्शन आचार्य दर्शन पुष्पदंत भूतबली जिनचंद्र कुंकुंदाचन गुरु कुंकुंद उमास्वामी समतभद्र शिवकोटि शिवायन भगवती न करना शिव को वीरचंद स्वामी भीमचंद नैनी चंद्रिका धीरे गोमकार न करता नैनी चंद्र परंपरा में वाणी इनके पीछे इनकी परिपाटी में आचार हुई, इनसे अर्थ का विच्छेद नहीं हुआ. ऐसे दिगंबरों के संप्रदाय में पुरुषना यथार्थ है. कैसे कहा है दिगंबरों ना संप्रदाय में कृष्ण में पुरुषना यथार्थ भगवान श्री चाली आवेली बात एना माटे बीजे બાળ બચ્ચા